Let us see the next question. X Limited is providing following information. Currently, it is doing business of the trading of the chemicals. It has 20% debt in the capital structure. Its equity beta is 1.50. Now it is going to diversify in a new line of the business. The new line of the business is the hotel line of the business. Proxy firm is Taj group of the hotels. The proportion of the debt financing in the capital structure is 30%. X Limited is going to keep 25% debt in the capital structure. In case of new line of the business, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दे रखा है 30%, आरएफ दे रखा है 20%. हाईलाइट द पोर्शन. इनकम टैक्स रेट इज 40%. कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न for X Limited from the new line of the business. That is the question. I request all of you to go through the question, please. तो हमको ऐसा दे रखा है that से X Limited का अभी एक बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ द केमिकल्स का. हाउएवर वो लोग अभी नए बिजनेस में जाने वाले हैं और नया बिजनेस है लाइक द होटल लाइन का बिजनेस. Now, in that say they have taken Taj group of the hotels as a proxy firm. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है that say proxy firm का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और उनका इक्विटी बीटा क्या है. ये जो बीटा दे रखा है उसको इक्विटी बीटा ही समझेंगे. हम लोग कितना डेट फाइनेंसिंग रखने वाले वो भी दे रखा है क्वेश्चन में. एंड मार्केट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन अबाउट द आरएफ एंड आरएफ. इनकम टैक्स का रेट दे रखा है हमको 40% और इसके ऊपर से हमको ये कैलकुलेट करना है दैट से व्हाट इज द रेट एट विच वी रिक्वायर द रिटर्न फ्रॉम द न्यू लाइन ऑफ द बिजनेस. दैट इज द क्वेश्चन. तो वापस हम लोग यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी कैलकुलेट करेंगे. स्टेप नंबर 2 में हम लोग बीटा ऑफ द लीवर्ड इक्विटी कंसिडरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू कीप वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. और थर्ड स्टेप में विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द ओवरऑल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऐसा करके हम लोग 3 स्टेप में आंसर कैलकुलेट करेंगे. इस पर इंपॉर्टेंटली ऐसा दे रखा है आपको कि इनकम टैक्स का रेट है 40%. तो अगर हमको इनकम टैक्स का रेट दे रखा है तो आंसर कैसे करने का वो एक नया पॉइंट है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी. फर्स्ट पॉइंट, in this question information is given about X Limited entering into a new line of business. Second point, for this decision make for this calculation for this we are required to compute weighted average cost of capital for new line of business. Full stop. For that information is given about proxy firm.
that is Taj Group of Hotels. Full stop. Third point, this time information is given about income tax rate. Full stop. So we have to find beta of unlevered equity using following formula. So beta of unlevered equity is equal to beta of levered equity divided by 1 plus debt into 1 minus t upon equity. That is the way the beta of unlevered equity is found. We are understanding the derivation in some time, but before that, we are starting with the calculation. Return answer. Step number 1. Calculation of beta of asset or beta of unlevered equity for new line of business. उसमें लिखो beta of unlevered equity is equal to beta of levered equity divided by 1 plus debt into 1 minus t upon equity. This is the way we are required to make the calculation of answer. क्वेश्चन में हमको दे रखा है that the beta of the equity is 1.6, that is beta of the levered equity. Debt financing है 30% और equity हो जाएगा 70%. So this is 1.60 divided by 1 plus debt financing is 0.3. Income tax rate is again 30%, sorry 40%, and the equity financing is 0.70. क्योंकि 30% debt है तो 70% क्या हो जाएगा, equity हो जाएगा. That is the way we are required to apply the formula. So we understand that's over here 0.3 into 0.6, that is 0.18 divided by 0.7, so it is 0.2571. So 1.6 divided by 1.2571, that comes to 1.2727. That is the way it is calculated. I just repeat the calculation.
सबसे पहले क्या किया जाएगा, 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 इंटू क्या करेंगे 0.3, सो न्यूमरेटर आ जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाय 0.7, तो वो राइट हैंड साइड का कंपोनेंट आ जाएगा 0.2571। तो फाइनली क्या करेंगे 1.6 डिवाइड बाय 1.2571, that is 1.2727. That is the way the beta of unlevered equity is calculated. Next, step number 2. Calculation of beta of levered equity. It is beta of unlevered equity is equal to beta of levered equity divided by 1 plus debt financing into 1 minus tax rate divided by equity financing. This is what we understand. So beta of levered equity is equal to beta of unlevered equity into 1 plus, देखो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट हम लोग डेट कितना रखने वाले, हम लोग डेट रखने वाले 25%. So we understand it, so the debt financing is 0.25. Income tax का रेट है 40%. Equity financing is 0.75. So what is the beta of unlevered equity? It is 1.2727, हमने ऑलरेडी करके रखा है, into we can understand this time क्या होगा 1 minus 0.4 यानी 0.6 आया, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई किया, सो न्यूमरेटर 0.15 आ गया डिवाइडेड बाय 0.75, तो राइट हैंड साइड का कंपोनेंट आ गया 0.20. सो इनटू क्या किया जा सकता है 1.2, सो 1.2727 into 1.2, that comes to 1.5272. That is the way the beta of the levered equity is calculated. चलो स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले आप करो फिर मैं करके देता हूँ. Step number 3, calculation of WACC, weighted average cost of capital. उसमें लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of KD. It is rate of interest into 1 minus tax rate. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमको 12%. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, वी अज्यूम दैट से द डिबेंचर्स विल बी इश्यूड एट RF 12% into 1 minus 0.40, so 12% into 0.6, that is 7.2%. That is a KD. Working note number 2, calculation of KE. K के लिए सिंपल फॉर्मूला होगा RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 12. Beta is 1.5272. RM is 30, RF is 12. 12 plus 1.5272 into 18. 12 plus
1.5272 into 18, that is 27.49. So it is 39.49%. ये cost of debt financing और cost of equity हो. Now based on that, we'll do step number 3 or working note number 3. Calculation of weighted average cost of capital. Cost of equity into weight of equity. Cost of debt into weight of debt. Cost of equity कितना 39.49 है. Weight of equity कितना है? Weight of equity is 0.75. क्योंकि 25% debt. 7.2 into 0.25. That is the way we are required to make the calculation of answer. So 39.49 into 0.75, 29.62, 7.2 into 0.25, 1.80. That is 31.42. This is the way the weighted average cost of capital or overall cost of capital can be calculated. चलो, let us have summary of the working that we have done. सबसे पहले हमने ऐसा समझा है that say when there is no debt financing, तो बीटा ऑफ द इक्विटी हो जाएगा 1.2727 और तभी मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा वो कैलकुलेट किया है, इट इज़ 34.91. डेट फाइनेंसिंग हम लोग 25% रखने वाले हैं, उसमें बीटा ऑफ द इक्विटी बढ़ेगा 1.5272, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगा पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल फॉल डाउन. क्यों ऐसा? क्योंकि यू गेट द एडवांटेज ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग ऑन द डेट फाइनेंसिंग. इसकी वजह से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता है. थर्ड सिचुएशन में जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉक्सी फर्म वाला डिटेल्स, प्रॉक्सी फर्म का डेट है 30% और उनका बीटा ऑफ इक्विटी है 1.6. अगर उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करेंगे ना तो और बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि बीटा ऑफ द इक्विटी बढ़ता है. पर उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करेंगे ना, आई एम सॉरी, दिस इज 0.3. Cost of debt financing is 7.2 and its weight is 0.30. So it is 2.16 plus 28.56, that is 30.72. This is the way the weighted average or overall cost of capital is found. और जो और नीचे जा रहा है, what I want to tell you is that से हम लोग जो NOI अप्रोच में पढ़ते थे विद टैक्सेस में ऐसा होता था कि जब आप डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करोगे तभी एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ेगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ेगा, you get the advantage of the lower cost of the funds and most importantly you get the advantage of the interest tax saving. इसलिए with the introduction of the debt financing in capital structure, weighted average cost of capital will fall down. ऐसा हम लोग समझते हैं. So if at all we draw a diagram, तो diagram कुछ ऐसे work होता है. This is the cost of debt financing. This is cost of equity and weighted average cost of capital. जब debt financing नहीं है, जब डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है. However, the company is getting advantage of the lower cost of the funds and apart from that it is getting the advantage of the interest tax saving. इसलिए क्या होगा कि हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाता है. That is what we understand. So we have increase in cost of equity
and decrease in the weighted average cost of debt. On x-axis we have debt financing in capital structure. And on y-axis we have cost of capital. You may write this if you want to write. Now, starting with the derivation of the formula. For the purpose of understanding the derivation of the formula, we have to recall the NOI approach. हम लोग जो पढ़ते थे कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में, इन दैट विथ टेक्सेस, उसमें हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते थे कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग. So value of levered firm is value of levered equity plus value of debt is equal to value of unlevered firm plus present value of interest tax saving. का कैलकुलेशन कैसे होता है? Value of debt into income tax rate. So now we understand that the value of unlevered firm is equal to value of levered equity plus value of debt minus value of debt into tax rate. So value of levered equity plus value of debt into 1 minus income tax rate. That is the value of unlevered firm. Let us say that this is like number 1 or A. ऐसा कुछ करते थे इसको. ये डेरिवेशन का एक पार्ट है. Then next we understand that say value of unlevered firm is equal to value of unlevered equity, क्योंकि डेट वैल्यू तो होता नहीं है. वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी कैसे किया जाता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट. तो EBT into 1 minus T, EAT divided by cost of unlevered equity. We understand that so the amount of the interest is 0 क्योंकि unlevered form है. So we have earning before interest and taxes into 1 minus income tax rate divided by cost of unlevered equity. This is what the value of unlevered firm. Let us say that say this is B. Again ये एक equation जैसा फॉर्म हो गया. Now value of the unlevered firm के सामने दो वैल्यू आ गया. एक ये वाला वैल्यू, that is this one, value of unlevered equity plus value of debt into 1 minus tax rate, और दूसरा क्या, EBIT into 1 minus T divided by cost of unlevered equity. अच्छा, so we can have a kind of equation like this: value of levered equity plus value of debt into 1 minus tax rate is equal to EBIT into 1 minus T divided by cost of unlevered equity. So now EBIT into 1 minus T is equal to value of levered equity into cost of unlevered equity plus value of debt into 1 minus tax rate.
This is what we understand is equation number 3. Now we understand that the cost of levered equity minus cost of unlevered equity. दूसरा एक वैल्यू हम लोग दैट इज से सबसे पहले डिराइव करेंगे बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी का कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज आर एफ प्लस बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ माइनस कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी कैसे होगा? आर एफ प्लस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ. So it is RF plus beta of levered equity into RM minus RF. जब हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? RF नेगेटिव हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? वापस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी नेगेटिव हो जाएगा इंटू RM माइनस RF. तो देखो ये RF पॉजिटिव है और ये RF नेगेटिव है, वो एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ माइनस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? आर एम माइनस आर एफ को कॉमन ले सकते हैं. सो वी हैव बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी ब्रैकेट में होगा आर एम माइनस आर एफ. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका भी हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं. इट इज आर एफ प्लस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ. RF plus beta of debt into RM minus RF. So we will have RF plus beta of unlevered equity into RM minus RF. When you open the bracket, it becomes minus RF minus beta of debt इंटू आर एफ माइनस आर एफ. तो क्या होगा? आर एफ पॉजिटिव और आर एफ नेगेटिव एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बचेगा क्या? बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ, बीटा ऑफ डेट इंटू आर एम माइनस आर एफ. So beta of unlevered equity minus beta of debt और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आर एम माइनस आर एफ. बीटा ऑफ डेट को क्या लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा. वाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी रिस्क जनरली. सो डेरिवेशन के लिए उसको 0 मान लिया. सो बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. And this is equation number 5. अभी फॉर्मूला का डेरिवेशन शुरू हो रहा है, ठीक है ना? ये सब वैल्यूज को अभी हम लोग यूज करेंगे. चलो, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट. तो ईबीटी आ गया इंटू 1 माइनस टी, EAT आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी. So I am rewriting the equation. It is value of levered equity is equal to EBIT into 1 minus T minus इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज वैल्यू ऑफ डेट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट आ गया इंटू 1 माइनस टैक्स रेट.
डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी। कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके गया और वैल्यू ऑफ द लीवर्ड इक्विटी को मैं राइट हैंड साइड लेके आया। सो आई एम रीराइटिंग द इक्वेशन। कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी इज इक्वल टू, नाउ ये जो EBIT इंटू 1 माइनस टी वैल्यू है ना फ्रेंड्स, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। इट इज EBIT इंटू 1 माइनस टी। कहाँ से? जो ऊपर हमने कैलकुलेशन किया ना वहां से, दैट इज दिस EBIT into 1 minus C is replaced with this value. It is value of the levered equity into cost of unlevered equity plus value of debt into 1 minus tax rate. So it is value of the levered equity into cost of unlevered equity plus value of debt into 1 minus T minus value of debt into rate of interest into 1 minus T. Whole divided by value of levered equity. Proceeding further, cost of levered equity is equal to value of levered equity into cost of unlevered equity divided by value of equity, value of levered equity plus value of debt into 1 minus tax rate minus, there is a mistake on my end, I'm sorry, I just rectify it. EBIT into 1 minus C, उसमें this is transferred on the left hand side, so it is value of levered equity into cost of unlevered equity plus value of debt into 1 minus C into cost of unlevered equity. So over here there is a rectification to be made. It is cost of unlevered equity. Okay, so we will have over here the calculation to be made like this further. Value of debt value of debt into 1 minus T, value of debt into 1 minus T is taken common, into cost of unlevered equity minus rate of interest, and value of levered equity is kept in the denominator. I am explaining that again to all of you. हमने सबसे पहले क्या किया, EBIT into 1 minus T को ये वैल्यू से रिप्लेस किया. दिस इज केप्ट एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया. फिर क्या किया हमने, डेट से ये जो वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ द लीवर्ड इक्विटी है उसको दो बार लिखा हमने. वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी, ऐसा लिखा हमने. और राइट हैंड साइड वापस हमने लिखा जिसमें वैल्यू ऑफ डेट इनटू 1 माइनस टी, वैल्यू ऑफ डेट इनटू 1 माइनस टी, उसको हमने कॉमन लिया. ब्रैकेट में क्या लिया हमने, कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी करेंगे, दैट इज दिस. ओके, सो ये वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी, ये वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी के सामने कैंसिल हो जाएगा. सो कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड शिफ्ट होगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू वी विल बी हैविंग वैल्यू ऑफ डेट into 1 minus tax rate upon value of levered equity.
इंटू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी का हमने एक इक्वेशन फॉर्म ऑलरेडी कर लिया है। देखो कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी का इक्वेशन ये है, बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ, एंड कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका भी हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया है। तो उसका इक्वेशन है बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ, ऐसा करके दोनों का इक्वेशन है हमारे पास। सो आई एम राइटिंग दैट इक्वेशन, बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ is equal to value of debt into 1 minus tax rate upon value of levered equity into beta of unlevered equity into RM minus RF। तो ये RM minus RF क्या होगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, and we will be having, so the beta of levered equity minus beta of unlevered equity is equal to beta of unlevered equity into value of debt into 1 minus tax rate upon value of levered equity। Next, it is transferred on the opposite side, so beta of levered equity is equal to beta unlevered equity plus ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, beta of unlevered equity into value of debt into 1 minus tax rate upon value of levered equity। Now beta of unlevered equity is taken common, is equal to, sorry, multiplication 1, ब्रैकेट में 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी प्लस, ठीक है ना, बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी को कॉमन लिया प्लस वैल्यू ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया, बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी अपॉन 1 प्लस वैल्यू ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी को हम लोग क्या रिप्लेस कर देते हैं, डेट और इक्विटी से रिप्लेस कर देते हैं। सो इसलिए हमारा फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं, बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी अपॉन 1 प्लस डेट इंटू 1 माइनस टी अपॉन इक्विटी। ऐसा कर से ये सिंपल फॉर्मूला आता है। राइट ऑन आंसर, that is derivation। So it start with the NOI approach with taxes, जिसमें लोग शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्सेबल, वहां से हम लोग शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म कैसे होता है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, इट इज वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्सेबल। फिर वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म को एक साइड रखा और वैल्यू ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग को ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया। देन वैल्यू ऑफ द डेट इज टेकन कॉमन और 1 माइनस टी को हमने ब्रैकेट में ले लिया। 1 इन द ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द डेट
सेकेंड, वापस वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म का हमने वैल्यू रखा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी का कैलकुलेशन कैसे होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट यानी EBT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी। ब्याज क्या होगा, जीरो होता है, सो इट इज EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी, दैट इज व्हाट वी हैव। अच्छा, नेक्स्ट हमने वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म का दो वैल्यू आ गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट और EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी। इन दोनों को हमने इक्वेट किया, सो वी हैव वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी। सो नाउ EBIT इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ द डेट इंटू 1 माइनस टी इंटू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी, उसका भी एक हम लोग वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि वो हमको बाद में काम आएगा। इट इज RF प्लस बीटा ऑफ द लीवर्ड इक्विटी इंटू RM माइनस RF माइनस कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी कैसे होगा, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। बीटा कौन सा होगा, अनलीवर्ड इक्विटी का। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट RF बिकम्स नेगेटिव, बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू RM माइनस RF ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव, तो RF RF एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या हमारे पास, बीटा ऑफ द लीवर्ड इक्विटी इंटू RM माइनस RF माइनस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू RM माइनस RF। सो नाउ बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी और RM माइनस RF को हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली वी हैव द फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी कैसे होगा, RF प्लस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू RM माइनस RF माइनस ऑन द ऑपोजिट साइड RF plus beta of debt into RM minus RF. Again, when you open the bracket, RF becomes negative, beta of debt into RM minus RF becomes negative. RF RF cancel हो गया, beta of unlevered equity into RM minus RF minus beta of debt into RM minus RF. RM minus RF को हमने common ले लिया and beta of unlevered equity minus beta of debt. हम लोग beta of debt को zero assume करते हैं, इसलिए unlevered equity का beta इंटू RM माइनस RF, ये हमारा इक्वेशन हो गया। उसके बाद हमारा डेरिवेशन शुरू होता है। सो इट इज वैल्यू ऑफ द लीवर्ड इक्विटी इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी। नाउ EBIT इंटू 1 माइनस टी किया, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी किया, इंटरेस्ट को रिप्लेस किया एज वैल्यू ऑफ डेट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर EBIT इंटू 1 माइनस टी को हमने इक्वेशन नंबर 3 से रिप्लेस किया, दैट इज वैल्यू ऑफ द लीवर्ड इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टी इंटू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी माइनस राइट हैंड साइड का कंपोनेंट एज इट इज रखा एंड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी को ऑलरेडी हमने स्वैप कर चुके हैं। Then what we have done more than one thing over here. हमने सबसे पहले इक्वेशन को स्प्लिट किया, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ द लीवर्ड इक्विटी प्लस राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ डेट इनटू 1 माइनस टी, वैल्यू ऑफ डेट इनटू 1 माइनस टी, उसको कॉमन लिया हमने। फिर राइट हैंड साइड हमने लिया कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके डिवीजन में वापस हमने वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी लिखा। ना वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी एक दूसरे के सामने कैंसिल हो गया और कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी को लेफ्ट हैंड साइड हमने शिफ्ट किया। सो कॉस्ट ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी ये दोनों वैल्यू को हमने रिप्लेस किया विद इक्वेशन 4 and 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी इंटू बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इंटू RM माइनस RF इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम चीज हमने रिप्लेस किया, दोनों जगह से RM माइनस RF हमने कैंसिल किया। सो नाउ वी हैव बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी माइनस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी, राइट हैंड साइड सेम, बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी को राइट हैंड साइड हमने शिफ्ट किया तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया।
फिर बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमने 1 लिखा, 1 ब्रैकेट में बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। और फिर फाइनली वी हैव द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्विटी को हम लोग डेट और इक्विटी लिखते हैं।